Now the third very important feature is blend of rigidity and flexibility. Well, the constitutions are also classified into rigidity and flexibility. Now just to explain first the difference between the rigidity and the flexibility, let us take these two examples. A rigid constitution is a one that requires a special procedure for its amendment, and as example we have American Constitution. And a flexible constitution on the other hand is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made, and for example here we have the British Constitution. So here we need to understand that our constitution is a blend of this both rigidity and flexibility. It is a rigid constitution in one hand as well as it is flexible on the other hand. Now when we talk about the rigid constitution, it is exactly like how American Constitution is. An American Constitution is a very rigid constitution, and if they want to amend certain aspects of American Constitution, they need to have special procedure. Then only they can amend American Constitution. On the other hand, when we talk about flexible constitution, then it is like a British Constitution. In British Constitution, you can amend the constitution like any other ordinary laws, so you don't need to have a special procedure. So when it comes to Indian Constitution, the Constitution of India is neither rigid nor flexible, but a synthesis of both. So when we talk about Indian Constitution, it is not a rigid as well as it is also not flexible. So in short, it is synthesis of both. So as I said, Indian Constitution at some point will act as a rigid constitution, whereas on the other hand it will also gonna act as a flexible constitution. सो जब हम ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत देश का, वो इस दोनों को मिलाकर बनाया गया है. जब हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आता है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको स्पेशल प्रोसीजर लगता है. वेरेज जब हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एग्जांपल आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कुछ अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग आराम से कर सकते हैं जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ करते हो. और जब भारत की बात आते हैं तो हमने क्या किया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों को मिलाकर बीच में हमने रास्ता निकलवा लिया है. और इसी की वजह से कुछ जो भारत के जो कानून है वो बहुत रिजिड है, वो चेंज नहीं हो सकते हैं. वैसे कुछ कानून ऐसे फ्लेक्सिबल बना है कि ताकि समय समय पर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं. एंड देयरफॉर आर्टिकल 368 provides for two types of amendment. And therefore when it comes to India, when it comes to amending Indian Constitution, it is clearly mentioned that under Article 368 there are two types of provisions which have been given. With this there can be an amendment in Indian Constitution. Now which are those two types of amendment? First, some provision can be amended by special majority of the parliament, that is a 2/3 majority of the members of each house present and voting. And second, some other provision which can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total state. So these are the two provisions which have been given under Articles 368, that if Government of India or India as a whole wants to amend certain part of Indian Constitution, then they have to follow these two provision. जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अगर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो चेंजेस कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, वो सारी आर्टिकल 368 में दिए गए हैं. इस आर्टिकल में 2 प्रोविज़न दिए हैं. उस प्रोविज़न के हेल्प से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड हो सकता है.
जो पहला प्रोविजन है वो बेसिकली कहता है कि सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो बेसिकली 2/3 मेजोरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो प्रोविजन है वो है कि फॉर सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो अदर्स प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उनको अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में लानी पड़ेगी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से चेंज कर सकते हैं। सो देयरफॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज blend of both rigidity as well as flexibility. So this is all about the third salient feature of Indian Constitution.